For 17 years, I wore these glasses, removing it before every photo, every sport. And for last 6 years, I had the money and option to remove it permanently, but I was so scared to move forward with it. I was in 6th standard जब मैंने पहली बार glasses पहनना शुरू किया, and it was very awkward for me. And my classmates used to tease me, calling me names like Chashmish or Double Battery. I was so insecure about my glasses that I used to remove it before taking any pictures. In those early years, my number used to fluctuate a lot. It started out with 4.5 in each eye and gradually reduced to 3. I very vividly remember that my doctor telling me that when my number stabilizes and I am 20 years old, that I will be eligible for a LASIK surgery. And that sparked a hope in me that I could someday remove these glasses permanently. And when I turned 22, everything aligned. My number stabilized. Money wasn't a problem because I started working for a job. And even my family was very supportive. My father used to say, if it improves your lifestyle, go ahead with it. And like any other person who wants to get LASIK done, I went to the internet to research about it. But there I really got confused, nervous, and scared at the same time. There was a lot of content related to LASIK. मैं देख रहा था कि जिन लोगों ने ऑलरेडी लेसिक करवाया है उनका क्या एक्सपीरियंस है. मैं देख रहा था डॉक्टर्स इस बारे में क्या बोल रहे हैं. मैंने पता की कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेसिक सर्जरीज. मैंने बहुत सारा इन्फॉर्मेशन कंज्यूम किया. तो आफ्टर रिसर्चिंग अबाउट इट अ लॉट, I really got scared, especially when it comes to your eyes. मैं और ज़्यादा कॉन्शियस हो रहा था इस डिसीजन को लेके कि भाई इसको करवाना भी चाहिए या नहीं करवाना चाहिए, बिकॉज वन ऑफ माई मेजर कंसर्न्स वर व्हाट इफ आफ्टर गेटिंग दिस सर्जरी डन फ्यूचर में मेरा नंबर वापस आ जाता है. देयर इज अ सेइंग, ओवर थिंकिंग किल्स मोर ड्रीम्स देन फेलियर एवर डज. एंड जस्ट लाइक दैट 6 साल गुजर गए. रिसर्च विदाउट एक्शन. I was overthinking about this a lot and I was not able to take any action. In 2024, I finally decided that I want to get my LASIK surgery done. I went to the nearest ASG hospital which specializes in eye care. There were a lot of procedure. My eyes were dilated. I went through a lot of different tests. And जब result आया, I went for the final consultation with the doctor. After going through my results, doctor suggested me that my cornea is very weak and I should not go ahead with the procedure. And that literally shattered me. उस टाइम मुझे लगा कि शायद अब मुझे अपनी पूरी ज़िंदगी ग्लासेस में ही रहना पड़ेगा. My dream of getting my glasses removed was over. I left that dream behind for a period of time. But again, in 2025, I went to a very acclaimed eye hospital. There also, I went through all the tests. And when the results came, doctor said I was eligible for femtocontura LASIK. And at that moment, I wasn't happy at all. I was very confused. बिकॉज 1 साल पहले ही मुझे एक डॉक्टर ने बोला है कि भाई इट्स नॉट पॉसिबल फॉर माई कॉर्निया इज़ वेरी वीक, आई शुड नॉट गो विद दिस प्रोसीजर. एंड अभी दिस डॉक्टर इज सेइंग कि आई एम एलिजिबल फॉर लेसिक. सो देन आई वेंट टू अ थर्ड डॉक्टर फॉर थर्ड कंसल्टेशन. And this time, this doctor really helped me clearing all my questions. I showed him my test results and asked if I was eligible for an eye surgery. And he suggested me that with my cornea size and thickness, I was eligible for femtocontura LASIK surgery. It's a bladeless LASIK surgery. Then I also asked कि last year I went to this hospital जहाँ पे उन्होंने मेरे को बोला कि I'm not eligible for contura, and this time I'm went to this doctor who is saying कि I'm eligible for contura. तो उन्होंने मेरे को समझाया कि ASG hospital doesn't have that technology of femto contura. They have the procedure that includes blade. Since they don't have that technology, they just say that you're not eligible for LASIK. उन डॉक्टर ने मुझे समझाया कि ऐसा नहीं है कि सर्जरी हो नहीं सकती, इट्स जस्ट दैट कि वो लोग ये सर्जरी नहीं कर सकते. इफ अ हॉस्पिटल डजंट हैव दैट टेक्नोलॉजी, वो आपको वो सजेस्ट नहीं करेंगे. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू आर गोइंग टू गेट अ लेसिक सर्जरी डन, यू गो टू अ हॉस्पिटल जहाँ पे उनके पास सारी सर्जरी हो, ब्लेडलेस भी हो, ब्लेड वाली भी हो, स्माइल भी हो, स्माइल प्रो भी हो. जब एक हॉस्पिटल के पास सारी टेक्नोलॉजी होती है तो दे सजेस्ट यू द बेस्ट वन which is suitable for your condition. For me, I wasn't eligible for Smile or Smile Pro. I was eligible for Contura, but Contura mein I was only eligible for Femto Contura, which is a bladeless surgery. And it wasn't a small decision because my eyes were at stake. मैंने अपनी सारी हिम्मत इकट्ठी की.
आई फाइनली वेंट फॉर द प्रोसीजर. मैंने भगवान का नाम लिया कि भगवान प्लीज़ बचा लेना, जो हो अच्छा हो. एंड देन फाइनली वो जो प्रोसीजर था दैट वाज ओनली फॉर 20-30 मिनट्स, बट उससे पहले का जो सारा प्रोसीजर था टू गेटिंग रेडी, डॉक्टर आपको आके एक्सप्लेन कर रहे हैं, मेरे पेरेंट्स को जाके समझाया जा रहा था कि इसके बाद मेरा टेक केयर कैसे करना है, मुझे बताया जा रहा था कि आगे आपके 2 to 3 months आर गोइंग टू बी वेरी क्रिटिकल, आपको बाहर सन ग्लासेस पहने बिना नहीं निकलना है, आँख में कोई भी डस्ट पार्टिकल नहीं जाना चाहिए, पानी नहीं जाना चाहिए, आप सर से नहा नहीं सकते. देयर वर अ लॉट ऑफ रेस्ट्रिक्शंस. मैं खुद भी बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहा था. वो सर्जरी सिर्फ 20 से 25 मिनट की थी. आई गेस हार्डली मेरे को ओटी के अंदर 20-25 मिनट लगा होगा, बट उससे पहले जो 3 घंटे का वेट था, इट फेल्ट लाइक एटर्निटी. वहाँ पे मुझे एंड साथ में जिन और लोगों का लेसिक हो रहा था वहाँ पे साथ में बिठाया गया. हमारे आंख में आई ड्रॉप्स डाली हुई, हमें इंस्ट्रक्ट किया गया कि अब आंख नहीं खोल सकते आप. एंड फॉर 2-3 आवर्स आवर आईज वर क्लोज्ड एंड हम वहाँ शांति में बैठे हैं. उतनी शांति से मेरे को लगता नहीं कि मैं कभी भी बैठा हूँ. हमारी बहुत आदत होती है कि हम फिजिट करते हैं, फ़ोन यूज़ करते हैं, बात करते हैं, रीड करते हैं, कुछ भी करते रहते हैं. एंड उस मोमेंट पे मेरे को काफ़ी एक ऐसे सडन रियलाइजेशन हो रहा था कि भाई मतलब हाउ समवन हु कांट सी फील्स लाइक. वो डर भी लग रहा था, बट फिर मैंने कहा कि नहीं, जो भी होगा अच्छा होगा. मतलब अब उस पॉइंट पे मैंने अपने आप को पूरा इन प्रोफेशनल्स के हाथ में दे दिया है कि भाई these are people who are doing this surgeries for a very long time, they know what they're doing. I went to the OT, सर्जरी हुआ, फिर मैं वापस आया. My mom and dad were there, उन्होंने मेरे को संभाला. फर्स्ट एंड सेकेंड डे वर वेरी डिफिकल्ट. माई आईज वर सोर, मेरे को एकदम आंखों में जलन हो रहा था, मैं आंख खोल नहीं पा रहा था. पूरे समय हमको सजेस्ट किया गया था कि भाई आपको आंखें बंद रखनी है. मुझे 4-5 उन्होंने ड्रॉप्स दिए थे जो कि दिन में 6-6 बार लगाना था, हर 5-5 मिनट के गैप पे. तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट. मैं पूरे दिन बस ऐसे बेड पे पड़ा हुआ था, आंखों में ड्रॉप्स लगा रहा हूँ. आई वॉज एबल टू सी द वेरी नेक्स्ट डे ऑल्सो. मेरे को बहुत विविडली याद है जब मैं सुबह उठा एंड मैं वहाँ पे मेरे सामने एयर प्यूरीफायर था. एयर प्यूरीफायर पे जो ब्रांड था, फोब्स करके वो ब्रांड है, वो मैं पढ़ पा रहा था. इट वॉज नेवर द केस जो मैं बिना चश्मे के मैं उतना दूर तक पढ़ पाता था. तो इट वॉज अमेजिंग टू रियलाइज कि हाँ भाई ये हो रहा है. इट वॉज जस्ट day 1 आफ्टर गेटिंग माई सर्जरी डन. एंड ऐसा भी नहीं है कि मेरे को अगले दिन ही पूरा क्लियर दिखने लगा. डॉक्टर ऑल्सो सजेस्टेड कि ये विजन धीरे धीरे इम्प्रूव होगी बिकॉज अभी यू हैव वेंट थ्रू दिस सर्जरी एंड आंखों को एकस्टम्ड होने में थोड़ा टाइम लगेगा. कट शॉर्ट टू नाउ, अभी it's been 4 months since my surgery and I want to tell you that it has been the best decision of my life to get my LASIK surgery done. It has been game changing for me. It has improved my confidence. It has improved how I see myself. बहुत सारी ऐसी चीज़ होती हैं जो जिनकी आँख सही होती है वो लोग नहीं समझ पाएंगे. जिनके पास बचपन से चश्मा उन्होंने पहना है वो लोग समझ पाएंगे. अभी भी even after 4 months, sometimes after waking up I reach out for my glasses क्योंकि मेरे को वो आदत हो चुकी है. आई यूज टू कॉन्स्टेंटली पुल अप माई ग्लासेस. तो अभी भी ऐसा होता है, मैंने चश्मा नहीं पहना, मैं ऐसे ऐसे कर रहा होता हूँ. मेरे साथ बहुत बार ऐसा होता है कि मैं मुंह धोने जाता हूँ तो फिर मैं ऐसे चश्मा उतारने की कोशिश करता हूँ कि मेरे को अपने मुंह पे पानी डालना है. तो देर आर अ लॉट ऑफ माइन्यूट थिंग्स इन लाइफ दैट हैज चेंज्ड फॉर मी एंड आई एम रियली हैप्पी अबाउट दैट. एंड आफ्टर दिस सर्जरी द ओनली थिंग आई रिग्रेट इज कि मैंने ये सर्जरी पहले क्यों नहीं करवाई. लास्ट 6 सालों से मेरे पास वो सब कुछ था जो रिक्वायर्ड था ये सर्जरी करवाने के लिए. द मनी, द सपोर्ट, द इंफॉर्मेशन. द ओनली थिंग दैट वॉज स्टॉपिंग मी वॉज फियर एंड ओवर थिंकिंग. एंड जिस चीज़ से मैं इतना ज़्यादा डर रहा था, इट टर्न्ड आउट टू बी जस्ट अ 20-minute procedure which eventually changed my life. If you are someone who has been putting off any decision that can change your life, I hope this was the push you needed. If you have any question related to Lasik or if you want to share your story, comment down below. I would love to hear that.